एजुकेशन समिट 2026 IRES 2026 का आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर भारत और रूसी संघ के प्रतिष्ठित गणमान्य अतिथि, वरिष्ठ प्रतिनिधि, नीति निर्माता, शिक्षाविद एवं संस्थागत प्रतिनिधि एक मंच पर एकत्रित हुए। रूस एजुकेशन द्वारा भारत में रूसी संघ के दूतावास तथा रशियन हाउस नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस समिट के उद्घाटन दिवस ने शिक्षा अनुसंधान, नवाचार, शैक्षणिक आदान प्रदान और संस्थागत साझेदारी के क्षेत्र में भारत रूस सहयोग और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। उद्घाटन सत्र में रूसी संघ के कई प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति रही, जिनमें भारत में रूसी संघ के राजदूत महामहिम डेनिस अलीपोव, भारत में प्रतिनिधि कार्यालय की प्रमुख एलेना रेमिजोवा, रूसी संघ की स्वास्थ्य उप मंत्री डॉक्टर तात्याना सोमेनोवा के उप प्रमुख डॉक्टर पावेल शेवचोसोव तथा रूसी संघ के कृषि मंत्रालय के शिक्षा विभाग की निदेशक सुश्री यूलिया कोनिकोवा शामिल थे। इसके साथ ही उद्घाटन सत्र में भारत के कई प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, जिनमें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजात चंद्रकांत शेठ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर केसी शर्मा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के सचिव डॉक्टर पंकज मित्तल, एमईटी एजुकेशन ग्रुप के कुलपति प्रोफेसर गुरिंदर सिंह, शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक एवं अध्यक्ष प्रोफेसर पीके गुप्ता, संतोष डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर वीएन महालक्ष्मी, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर महेश वर्मा, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से डॉक्टर वंदना चौधरी तथा रूस एजुकेशन के उपाध्यक्ष एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर सेवानिवृत्त शामिल थे। समिट के पहले दिन 4 प्रमुख पैनल चर्चाओं का आयोजन किया गया, जिनमें चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, रोबोटिक्स, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, कृषि, खाद्य सुरक्षा, खेल, युवा सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ। इन चर्चाओं ने छात्र विनिमय, फैकल्टी एक्सचेंज, संयुक्त अनुसंधान, शैक्षणिक साझेदारी और दीर्घकालिक संस्थागत सहयोग को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। rigorous educational standards, the high quality scientific school, globally renowned. India has progressed a lot, especially lately, in educational standards. There's so much to gain from each other, and together, I'm confident we can make here, and we're hopeful that we will continue this series of education summits in future. This is the second one, so we will continue with it. Thank you. Thank you so much. We have inaugurated the second Russia-India Education Summit, which is a very welcoming development, because both our countries have a long-standing tradition and history of cooperation and ties in education. Over the decades, so many hundreds of thousands Indian students have studied in Russia, got qualified in Russia, and then contributed a great deal to the development of this country. So in the current circumstances, at the current stage, we are very eager to explore new avenues in education cooperation with India, to expand on this track. And we have started this process. The number of Indian students studying in Russia has increased. Russian universities are coming to India en masse and explore opportunities that have opened here in this country. In my address, I've mentioned the new education policy through which we are very keen to cooperate with India. We offer lots of opportunities in Russia for the Indian students, foreign students in general, in various fields. It is medicine, engineering, political sciences, healthcare,
So many areas in which we can expand and in which we can go forward together so that education becomes even stronger pillar of the overall strategic partnership between our countries. So this forum, we're not the only one here who are keen to expand cooperation with Indian education. But we want to be in the front rows of this process. And there is every opportunity for